Namaste students, myself Vishnu Samothya, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Session Physical Properties of Alkanes. Now we discuss the most important physical properties of alkanes and cycloalkanes in their almost completed lack of properties. So alkane up of four carbon atom are colorless, odorless gases. Alkanes form 5 to 17 carbon are colorless, odorless liquid, and above there are the colorless, odorless solids. स्टूडेंट्स अपन बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज और एल्केन में फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन कर रहे हैं कलरलेस ओडरलेस solid liquid and gases. So students, C1 to C alkanes are up to 1 C1 to C4 carbon atoms are gaseous molecules, okay, and C5 to C17 atoms are colorless odorless liquid, and above to C17 atoms are solid, okay students. So C1 to C4 gas, C5 to C17 लिक्विड एंड C17 से अबाव वाले कितने क्या होंगे solids. So almost the non-planar molecules. So therefore there are insoluble in water but soluble in organic solvent like CCl4, C6H6 and ethers. They are the melting and boiling point and density increases with the increases the number of carbon atoms. So write the increases in one carbon atom and there is increases the boiling points upon 20 Kelvin but increases its melting point is in regulars. ठीक है. So the most important, the electronegativity difference between carbon and hydrogen atom are 0.4 on the पुलिंग्स स्केल्स. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होता है 0.4 का. सो गिवन द स्मॉल डिफरेंस we classify the carbon hydrogen bond are non-planar covalent. So alkanes are non-planar compounds and the only interaction between their molecules are very weak London dispersion force, okay, जो कि weak dispersion force होता है. So the melting point and boiling point are represented in given table. That can be explained. Boiling points are alkane are lower than loss of the almost any other types of compounds of same molecules weight. So in general, both boilings and melting points of alkanes increases with increases molecular weight. Okay, यदि आपका molecular weight number of chain increases होती है तो अपना boiling point boiling points and melting points are increases होता था. तो number of molecular weight is directly proportional to boiling point and melting points. That can be represented in tables. Methanes are CH4, molecular weight is equal to 16, melting point is equal to 182 and boiling point is equal to 164. But ethanes are C3H3, C3CH2C3, molecular weight are 30.1 and melting point are 183 and boiling point are 88 and is a gaseous molecules. Okay, तो 1 to 4 are gaseous molecule. Okay, तो ये होते हैं अपने पास टोटल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सो द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सोल्यूबिलिटी ए केसेस लाइक डिजोल्व लाइक एल्केन्स आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर. दे आर अनएबल टू द फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डेड विद वाटर्स. स्टूडेंट्स एल्केन्स वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है क्योंकि वो वाटर के साथ क्या बना लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड. एल्केन आर सोल्यूबल टू इन ईच अदर्स एंड लाइक ए ऑर्गेनिक सोलवेंट्स CCl4 and C6 and others. So alkanes are also soluble in non-planar organic compound such as toluene and diethyl ethers. And the average density. So the average density of the liquid alkane listed in the table 11.4 is about 0.7 gram per moles. That of a higher molecular weight alkanes is about 0.8 gram molecular weight milliliters. So all liquids and solids alkanes are less dense
than waters, 1.0 gram per ml. So, and because they are insoluble in water, they float in water. Students, some important hydrocarbons: fuels, paraffin, petroleum, plastic, natural plants. Okay, तो ये होते हैं अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। स्टूडेंट्स, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन द इंक्रीजेज इज ब्रांचिंग इन आइसोमेरिक एल्केन्स, देर आर इज डिक्रीजेज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यदि स्टूडेंट ब्रांच चेन का आइसोमेरिक एल्केन्स आर इंक्रीजेज होगा तो उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज होगा, एंड दे चेन इज इंक्रीजेज, डिफरेंस इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर डिक्रीजेज। ओके स्टूडेंट्स, सो द अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम इन एल्केन, counting of the number of odd number atoms and even number as atoms. So the arrangement of carbon atom are even and odd number of carbon atom are continued to alkane is shown. So alkanes contains even number of carbon atoms has terminal methyl groups or opposite direction, and they are more closely arrangement is crystal lattice. So the intermolecular attraction increases, hence they are melting points are is high, and on other hands the alkanes counting odd number of carbon atoms have terminal methyl groups on same sides due to the less symmetry in crystal lattice. So they are not arrangement properly within crystals lattice, so hence intermolecular attraction is weak, so their melting point are less. ये स्टूडेंट्स odd number और even numbers कार्बन एटम का रीअरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अपन बता रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, यदि एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर कार्बन एटम हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड ओड नंबर आर कार्बन एटम आर लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स। ओके, थैंक यू।